draw those this thing. Now we said since there are two equations, there should be two lines, right? Do you recall what we spoke yesterday? All of you? I don't receive any response from you. Ma'am, Let me start plotting this. Plotting कल हमने वो annotation के साथ किया तो I don't think it got saved. So it doesn't matter, it won't take too long. Now when I say this, what is the highest value in the y-axis? 12, correct? x2. x2 में बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा वैल्यू? दोनों में देखो आप x1 x2 बराबर. Here also I'll mark x1 x2. सबसे बड़ा 6 है यहाँ पे 12 है. So 12 is the biggest one. So I'll mark till 12. I'm repeating what we did yesterday. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. थोड़ा बड़ा कर दो. Okay. I'm sorry, very sorry. Well, आएगा. Say 11, 12 भी किया तो भी. So what happens is 1, 2. I'm very sorry about it. Next time I'll draw in the middle of the page. ठीक है? 5, 6, 7. Okay? Now it's going to be first line is 0 and 6, 9 and 0. Okay? So it's going to be 0 and 6. 9 and 0. बराबर? एक सेकंड वैसे. Okay? And then it is 0 and 12 and 6 and 0. यहाँ पे दिक्कत आएगी but just manage. 12. Supposing I assume my 12 to be this. Okay? 0 and 12, and it is going to be 6 and 0. 6 and 0.
and now I said both are inside, barabar, both are inside. So let me shade an area which is inside. We had this quadrilateral, if you remember, correct? हमें ये क्वाड्रिलैटरल मिला था, हमने एक्सेस इसके ढूंढ निकाले, कोऑर्डिनेट्स निकाले थे. I don't know if you recall. I said this one, then this one. Let me mark them. A is going to be 0, 6. B 0, 0. Okay. C is going to be 6, 0, 6. बराबर. And D was this. This we said was 4 and 4. याद है आपको? Was it 4 and 4? मैम Again. Yes. Let me tell you what I did. मेरा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया हुआ था. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब दे हैड गिवन मी एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दे हैड गिवन मी स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स. कितने भी हो सकते हैं, जितने इक्वेशन होते हैं उतने लाइंस होते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स जितने ज़्यादा होते हैं उतने लाइंस होते हैं. तो अभी मेरे 2 है, इसलिए मेरे 2 लाइंस बने. ठीक है. सो दे हैड गिवन मी ए प्रॉपर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. They said that there is an objective function which is to maximize. There is a structural constraint. There are 2 structural constraints and there is a non-negativity constraint. So मेरा पूरा problem बन गया linear programming problem. So now I have to graphically solve, find out the value of x and y in such a way that my objective function stands maximized. ठीक है? So now when I plotted the graph, how did I plot the graph? Equation 1 में क्या था? I assumed x1 to be 0. मैंने assume किया. 0 कहाँ से आया? मैंने assume किया. तो x2 का वैल्यू निकाला. x2 0 and x1 का वैल्यू निकाला. ये फर्स्ट लाइन में किया. सेकेंड इक्वेशन के लिए एवरी इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन, क्योंकि लीनियर बोला तो इट इज गोइंग टू बी अ लीनियर. एक सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कर्व हो सकता है. Secondly, when I talk about the second equation, same way x1 0 assume किया, x2 का वैल्यू निकाला. x2 0 assume किया, x1 का वैल्यू निकाला, right? एंड उसको मैंने ग्राफ में प्लॉट किया. मुझे ये कैसे मिला? आई फाउंड आउट द साइन. मुझे पहले एक स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट में आपने साइन दिया है ना, वहां पे लिखा है लेस देन इक्वल टू 18. ठीक है, लेस देन इक्वल टू 18 बोला तो इसके अंदर आना चाहिए था, राइट? सेम वे लेस देन इक्वल टू 12 बोला तो इसके अंदर आना चाहिए. सो दैट वे आई प्लॉटेड, मतलब ये दोनों लाइंस के अंदर जो एरिया है, क्योंकि दोनों लाइन लेस देन इक्वल टू है, तो दोनों लाइन के लेस देन इक्वल टू मुझे ढूंढना पड़ेगा. तो मैंने ऐसे एक एरिया फाइंड आउट किया जो दोनों लाइंस के अंदर है, और उसके वर्टाइसेस मतलब जब भी 2 लाइंस ज्वाइन हो रहे हैं और एक पॉइंट बन रहा है, उसको बोलते हैं हम वर्टेक्स. तो ऐसे प्लूरल में बोलते हैं वर्टाइसेस. दिस इज अ वर्टेक्स, दिस इज अ वर्टेक्स, दिस इज अ वर्टेक्स एक्सेट्रा, एंड दिस इज अ वर्टेक्स. तो सारे वर्टाइसेस मैंने निकाले एंड देन आई फाउंड आउट देयर पॉइंट्स. तो वो पॉइंट्स को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा है? कौन से वैल्यू में हाईएस्ट आया? मैम डी. डी में क्या आया? मैम डी का है. डी कहाँ है बोलो? एक सेकंड, सॉरी. डी का हाँ 720 आया. उल्टा मुझे ए का 780 मैम ए हाँ 780 ए हाईएस्ट है. बराबर. तो मैक्सिमम z equal to 780. Therefore, x1 is equal to, what is the value of x1 here? 90.
x1 is equal to 0 and x2 is equal to, what is the value of x2 here? 6. Okay. This is where I should manufacture 0 of x1 and 6 of x2. That is how we understand if it is going to be manufacturing. समझ में आया? Are you following? Yes. Why 3? मैम एक x Perfect. x1 तीन x2 इक्वेशन है, 3 लाइंस रहेंगे. ठीक है. अभी मुझे सिर्फ इसका लेना है. ठीक है. I will say, I'll tell you why. जैसे हम सम करते हैं ना, आपको मालूम पड़ेगा. 1, मैं ये बोल्ड में करती हूँ इक्वेशन नंबर, so that it's easy for you to understand. 1, 2, 3. Okay, these are equation numbers 1, 2, 3. So now I'm going to say, let me start with 3. 3 says that minus 2x1 minus 2x1 x1 plus x2 equal to 1. ठीक है. So when I assume x1 x2, ठीक है, when I assume this to be 0, what is the value of this? It is going to be 1. When I assume this to be 0, what is the value of this? Minus half. Correct? इसको 0 करके देखो आप. सॉरी, इसको 0 करके देखो तो ये होगा -0.5. ओके, समझ में आ रहा है आपको? आर यू फॉलोइंग? yes So let Yes, ma'am. me plot what is the maximum value of x. ये यहाँ पे पूरा देखो 3 and 2. करेक्ट. x1 x2 का 3 and 2 ये भी है इक्वेशन में. So I will plot a graph here. यहाँ से चालू करती हूँ. Okay. So 1, 2, 3, 4. ठीक है. So let me start plotting. Okay, मैं ये लाइन से there is also negative value. I am sorry about that. Negative value 0.5 है, भले पर है. Okay, so let me stretch this. x1 में है ना negative value. So I will say -1 and -0.5. Okay, following Yes. all of you. So पहले Yes, ये ma'am. वाला प्लॉट करेंगे, फिर बाकी के लिए जाएंगे. ठीक है. 0 and 1. So here I will make a different color का mark. कौन सा कलर करे? ये करे, पटक से दिखना चाहिए. So I will say it is going to be 0 and 1. Okay, then minus 0.5 and 0. ठीक है, यहाँ पे आएगा. ठीक है. So can I draw a line and join that? ये join कर देते. Okay, now let me concentrate here. x1 is equal to 2.
बराबर, x1 इज इक्वल टू 2 ऐसा आएगा, ओके, एंड x2 इज इक्वल टू 3. Following all of you? Yes, no? यस टेढ़ा हो गया एक मिनट. मैम, आपने इक्वल टू लिखा नहीं उन लोग का. सर बेटा इक्वल टू इट इज अस्यूम. अच्छा ठीक है, चाहिए तो लिख लेती हूँ, बट इट इज अस्यूम व्हेन आई एम प्लॉटिंग इन द ग्राफ आई एम गोइंग टू प्लॉट इट एज इक्वल टू ओनली, ओके. फिर भी मैं चाहिए तो लिख देती हूँ, x2 is equal to 3 and x1 is equal to 2. x1 is equal to 2, x2 is equal to 3. ये ऐसे एक वेरिएबल आए तो इक्वेशन ऐसे ले लेने का. I will write it here for you. Any doubts so far? So I will write it as x1 is equal to 2, x2 is equal to 3. ठीक है? When I plot, I will take it only as equal to. Now, let me find out my area. What is happening here is, I'm going to say less than equal to. बराबर? हर जगह मेरा less than equal to ही है. So less than equal to के हिसाब से ये एरिया आएगा, ये पूरा आ जाएगा स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा. बराबर? Are you following? ये लाइन के अंदर ही आना चाहिए. सो आई विल से लेके यहाँ पे, बट देन इट इज कमिंग ओनली हियर. ये ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल, एकदम ऑड शेप का एक क्वाड्रिलेटरल आपको मिल जाएगा. बाहर नहीं जाने देना है इसे. ठीक है. Now, having this, any doubt so far? बाहर नहीं जाने देना, ये गलती से गया. Anyways, ठीक है, आपको समझ में आया ना? Yes, ma'am. Create this whole square. And now let me find out my ordinates. बराबर? My ordinates are going to be, I will first start with this. ये वाला एक coordinate बना मेरा, right? And then this is another ordinate. This one, this one, this one. Okay? आपको assumption में ये जीरो वाला लाइन assume ही नहीं करना है. We drew it for our convenience, क्योंकि यहाँ पे एक a है. समझ में आ रहा है? Are you all following? Are you following? I'm not giving you a break, but I will finish my lecture fast. एक problem minimize का करेंगे and then we will find out. And Monday again we meet. I will teach you primal dual. ठीक है? Now, minimize वाला करेंगे. Minimize z is equal to 3x1 plus 2x2. 3x1 plus 2x2 subject to 3x1 plus 2x2 1 .
less than equal to L x1 plus x2 greater than equal to 2 Now I want you to go through this problem fully. एक बार देख plus 4x2 equal to 12. Okay, so I will say x1, x2, 0. Okay, and this is going to be 3, 0, and this is going to be 4. बराबर? Following? Let me just start. Second is going to be again. I just copy the box. Okay. X1 is 0. What is this thing? X1 plus x2 equal to x1 plus x2 is equal to 2, right? x1 plus x2 is 0, 2. So I'll say 2. This is going to be 0. This is going to be 2. समझ में आया? Yes? Yes. So let me start plotting my graph. Now I start with x1 is 1, 2, 3, and 4, and 5. Okay. 1, 2, 3, 4. Barabar? So I will start. First equation says x1 is 0, x2 is 3. 3. Okay. Then I will say x1 is 4 and x2 is 0. एक second, sorry. Right? And then I will say 0 to 2, 0. 0 to 2, 0. Okay. So it's going to be 0 to 2, 0. अभी हमें क्या प्रॉब्लम है कि one equation says less than, another equation says greater than. Correct? Yes, ma'am. तो what I will do, less than कौन सा equation है? ऊपर वाला, उसके अंदर के constraints लेंगे, और more than बोलता है ना, उसके ऊपर के, तो हमें आएगा ये एरिया. I found out my area also. बराबर? Are you following? ऐसे क्यों किया मैंने? Yes, ma'am. Yes. बीच वाला क्यों लिया? क्योंकि ये छोटा लाइन बोलता है, I mean, नीचे वाला लाइन बोलता है कि it is more than, ऊपर वाला लाइन बोलता है it is less than. Following?
Yes. Yes. So now points is going to be 0, 3, A. 0 and 3. And then this is B. 0 and 2. Correct? 0, 2. ये वाला. और ये वाला point is 2 and 0 is my C. 2 and this is going to be C. This is going to be 4 and 0. 4 and 0 which is D. Okay? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Any doubts? Any doubts here? No. तो ये जो है शेडिंग के लिए यूज होता है, ये जो भी साइन है ना, टू आइडेंटिफाई द एरिया वी कॉल इट एज फीसिबल रीजन. ये जो शेड करते हैं ना उसको फीसिबल रीजन करके बोलते हैं. सो कैन आई स्टार्ट फाइंडिंग आउट हियर? नाउ इट सेज minimize z equal to, right, 3x1 plus 2x2 बराबर 3x1 plus 2x2. So first one I will say a is going to be 0, 3, right? That is going to be 3 into 0 plus 2 into 3. I will say equal to 6, right? Now B says 0, 2, which is equal to 3 into 0 plus 2 is what? 4. बराबर? 0 plus 4 is 4. Now C says 2, 0, which is equal to, I will say 3 into 2 plus 2 into 0. That is going to be 6. एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, मतलब बोल्ड कर देती हूँ सब. Now point D is going to be 4, 0, which is equal to 3 into 4 plus 2 into 0. बराबर? That gives me 12. Are you all following what I did? Yes, ma'am. Any doubts? No. तो अभी मुझे यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 4 minimize the मैं आंसर what will be my answer? 4. 4. B. 4. Why 4? सबसे कम मिनिमाइज क्वेश्चन में पूछे थे. Exactly. मिनिमाइज बोला तो सबसे मिनिमम कौन सा आता है उसको देखना है हमें, राइट? सो z is minimum, okay, at x1 is equal to 0 and x2 is equal to 2, right? And z
is equal to 4 is the minimum value. बराबर? Any doubt so far? No, ma'am. Sure? No, ma'am. देखो कल एक और मैक्सिमाइज प्रॉब्लम करेंगे, एक और मिनिमाइज प्रॉब्लम करेंगे, एंड देन आई विल टीच यू प्राइमल एंड ड्यूअल. कल मतलब मंडे. OIS लेक्चर जब भी है ना, तभी वी विल हैव द लेक्चर.